Extraneous variable. These variables could potentially influence the dependent variable but are not the controlled by researcher. These variables could potentially influence sorry these variables could potentially influence the dependent variable but are not the control ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आखिर डिस्कस किया था तो मैं पढ़ रहा हूँ दिस वेरिएबल्स could potentially influence the dependent variable but are not the controlled by a researcher. These variables could potentially influence the dependent variable but are not controlled by the researcher. These variables could potentially influence the dependent variable but are not controlled by the researcher. These variables could potentially influence the thing in on these variables could potentially influence the dependent variable but are controlled by researcher. Example: individual differences in participants like their prior experience with the task or the level of fatigue. एग्जाम्पल है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि पार्टिसिपेंट में जो डिफरेंस आ रहा है जैसे कि उनका सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा उनके टास्क के साथ और फटीग के लेवल के साथ. Individual differences in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual difference in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual differences in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual differences in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual differences in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual differences in participants like their prior experience with the task or their level of fatigue. Individual differences in participants like their prior experience with the task or the level of fatigue. Mediating variable. Mediating and पहले बात करते हैं confounding की. These variables are related to both the when making it difficult to कह रहे हैं ये वेरिएबल्स का ताल्लुक दोनों से होता है डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट. तो ये मुश्किल पैदा कर देते हैं कि हम अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या वो सच बोल रहा है क्या वो वाकई में डिपेंडेंट कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ. दिस वेरिएबल related to both the independent variable. This variable related to both the independent. This variable related to both the independent. This variable related to both the independent. This variable was independent. This variable was independent, making it difficult to determine, making it difficult to define, making it difficult to define, making it difficult to making it difficult to determine if that truly causing the change in TV, if the IV is truly causing the change in TV, if the IV is truly causing the change in TV, if the IV is truly causing in TV, if the IV is if the IV is causing the change in TV. This variable is to both the IV and DV, making it difficult to determine if the IV is truly causing the deep change in DV. Example है in a study examining the effect of exercise on mood, people might be diet as diet improve mood and may be linked to exercise habits. कह रहे हैं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक्सरसाइज पे जो इफ़ेक्ट डालता है वो मूड डालता है. लेकिन जो कंपाउंडिंग कह रहा है कि होता है आप डाइट भी ले लो ये वो भी आपकी मूड को इम्प्रूव कर देगी और उसका लिंक आप एक्सरसाइज की हैबिट के साथ भी है. In a study examining the effect of size, mood
it affects the mood. A confounding variable might be diet. A confounding diet. A confounding diet might be diet. As that can also influence mood. As that can mood. As that can influence mood. As that can also influence mood. As that can also influence mood, and may be linked to and may be and may be linked to and may be linked to and may be linked to habits, and combining life and mood and habits. बात करते हैं मेडिटेटिंग वेरिएबल की और मॉडरेटिंग वेरिएबल की। यहाँ पर आई थिंक मेडिटेटिंग की एग्जाम्पल लिखी है, मॉडरेटिंग एग्जाम्पल नहीं लिखी हुई, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। Meditating variable. These variables are in the causal chain between. Meditating variable क्या है? यहाँ पर मॉडरेटिंग एग्जाम्पल नहीं, मैं शाम तक कर लूँगा उसको। तो पहले हम बात करते हैं meditating variable. These variables are in the causal change. एक एग्जाम्पल मैं शाम में बताऊँगा, याद आने की आप मुझे कमेंट कर देना। रेटिंग वेरिएबल दिस द causal chain between the independent and dependent वेरिएबल। जो रेटिंग वेरिएबल्स हैं ये एक ब्रिज का काम करते हैं, तो उनको जोड़े रखते हैं इंडिपेंडेंट को, और ये फिर हेल्प होती है किस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्ट्रेस है, वेरिएबल प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस से आपको क्या आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया। मेडिटिंग वेरिएबल क्या करेगा कि स्ट्रेस के हार्मोन को यानी उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, मेडिटेटिंग वेरिएबल दिस वेरिएबल आर इन द causal chain these variable are in the causal chain to the independent and fundamental. These variable are the chain between the independent problem. These variable are in the chain between the independent. However, these variable are in the chain between the independent. However, they help explain how the independent variable affect the independent variable. They help explain how the independent affect the impact. They help explain how the independent affect the impact. They help explain how the independent. They help explain how the independent variable. Example: if the dependent variable is stress and the variable is variable might be stress hormones. बात करते हैं मॉडरेटिंग की, जो बताऊंगा शाम में एग्जाम्पल। मॉडरेटिंग वेरिएबल एक्सप्लेनिंग पेन और फोर फॉर्म एदर ताल्लुकात अक्यूरिंग इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। मॉडरेटर कहता है कि जो स्ट्रेंथ बताता है और डायरेक्शन बताता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डायरेक्शन वो बता रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बता रहा होता है कि वो कितने इन्फ्लुएंसर हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन व्हेन और फोर फॉर्म एज ताल्लुकात इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, 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 इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ intervening
a variable है an intervening variable is a variable come between the environment content and influence the experience है. You have to explain how or why the इंटरवेनिंग क्या करता है कि बताता है कि कैसे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या नाम है अफेक्ट करता है डिपेंडेंट के ऊपर. हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट वेरिएबल, हाउ इंडिपेंडेंट ताल्लुकात बताता है कि क्या ताल्लुकात इंडिपेंडेंट कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं कि नहीं, ये उनके ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है. ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. एक शौहर है, एक बीवी है, तो क्या ताल्लुक है भाई आपस में. हाँ दोनों का निकाह हुआ है, इसलिए जो है वो उनका ताल्लुकात है. तो वैसे ही ये एग्जाम्पल आपको ने दी, तो इसको हम ऐसे कि इंटरवेनिंग है, ये एज आ निकाह आप मांग लें. और ये आप ऐसा एग्जांपल कि ये इंटरवेनिंग है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक निकाह है दोनों के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान. इंडिपेंडेंट अवेलेबल जैसे कि साइज है, उसका वो ताल्लुक है. तो डाइट आ गया, वहाँ ताल्लुक है, डाइट भी ज़रूरी है. कैसा ये है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं. साइंटिफिक मेथड इज द अप्रोच यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू systematically acquire knowledge and understanding about behavior and other phenomena of interest. Scientific method is the approach used by psychologists to systematically acquire knowledge and understanding about behavior and other phenomena of interest. Scientific method is the approach used by psychologists to systematically acquire knowledge and understanding about behavior and other phenomena of interest. Scientific method is the approach used by psychologists to systematically acquire knowledge and understanding about behavior and other phenomena of interest. Scientific method is the approach used by psychologists to systematically acquire knowledge and other understanding about behavior and other phenomena of interest. 4 से होते हैं इसके. पहला के बाद आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट. दूसरा आपके पास फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन. थर्ड है कैरिंग आउट अ रिसर्च डिजाइन टू सपोर्ट कैरिंग आउट a research to design support carrying out a research design to support carrying out a research design support carrying out a research design to support communicating the finding, communicating the finding, communicating the finding, communicating the finding, communicating the finding. Identifying question of interest, formulating an explanation, carrying out research designed to support communicating finding. Hypothesis is a prediction in a way that allows it to be tested. Hypothesis is a prediction stated in a way that allows it to be tested. Hypothesis is a prediction stated in a way that allows it to be tested. Hypothesis is a prediction stated in a way that it to be tested. Hypothesis is a prediction stated in a way that allows it to be tested. As this time for theory, the time of they have tests and time. Standards of theory, they have tests and time of theory. They have tests and time of theory. They have tests and time of theory. They have tests of theory. This is a prediction
theory in a way that are to be tested. Theories that test the sound of theories. अगर आपके पास है क्या नाम correlational research. In comparison, two sets of variables are examined to determine whether they are still operated. यानी कि वेरिएबल के दो सेट्स हैं, तो ये उनको एग्जामाइन करता है. द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ताल्लुकात बिटवीन टू वेरिएबल्स. द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ताल्लुकात बिटवीन टू वेरिएबल्स. द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ताल्लुकात बिटवीन टू वेरिएबल्स are by mathematics. The strength and direction of the ताल्लुकात बिटवीन टू वेरिएबल्स. The strength and direction of the वेरिएबल्स by mathematics. इसके लिए प्रथम पढ़ दो. The change that the researcher deliberately makes in an experiment is called the experimental manipulation. The change that the researcher deliberately makes in an experiment. The change that the researcher deliberately makes in an experiment. The change that the researcher deliberately makes in an experiment. The change that the researcher deliberately makes in an experiment is called the experimental manipulation. 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 It is used to detect ताल्लुकात between different variables. यानी कि एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन भी एक रडार काम करता है जो कि ताल्लुकात को डिटेक्ट करता है मुख्तलिफ जो होते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. आप दो ग्रुप आते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आता है रिसीव ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में आता है नो रिसीव ट्रीटमेंट. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप में आता है नो रिसीव ट्रीटमेंट, नो रिसीव ट्रीटमेंट. Independent variable is the condition that imply this point. Okay, maybe to change as a result of experimenters. Okay, टू एक्सपेरिमेंट में आता है रैंडमाइजेशन होती है. कंट्रोल ग्रुप होता है रैंडमाइजेशन कंट्रोल ग्रुप manipulation of IV और कैजुअल ताल्लुकात इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शॉपों में IC कुछ चीज़ आ रहा हो, कोई जिसमें कोई कॉज हो रहा हो, कोई चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कोई चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कुछ चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कोई चेंज आ रहा हो, कॉज हो रहा हो, कोई चेंज आ रहा हो. डिपेंडेंट में आता है मेजर इफेक्ट. Dependent variable, manipulated variable, predictor, cause, manipulated independent variable, manipulated a variable, predictor, cause, independent variable, independent variable, predictor, cause. इनको चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. इंडिपेंडेंट वेरिएबल predictor, cause. Dependent variable, outcome variable, response effect. 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 Dependent variable, outcome variable, response effect.
3. Independent variable: study hours, sleep time, size, caffeine, music. Independent people: study hours, study hours, study hours, study hours, study hours, study hours, study hours. Sleep time, sleep time, sleep time, sleep time, sleep time, sleep time, sleep time. Uh, exercise, 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 exercise. और डिपेंडेंट टाइम क्या होगा? एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर। स्टडी आर का डीवी होगा एग्जाम स्कोर। और जो स्लिप टाइम उसका होगा एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। एक्सरसाइज का डीवी होगा वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। और कैफीन का होगा मेमोरी, 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 मेमोरी। और म्यूज़िक का होगा मूड, 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 मूड। कंट्रोल में आते हैं आपकी हैबिट्स। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल हो सकती है, लाइक स्लीपिंग हैबिट है, ईटिंग हैबिट है, एक्सरसाइज है, स्टडी हैबिट है, स्क्रीन टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, और स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। डिस्कस करें एक्सटर्नल सेरेब्रल। बात ही कोई भी आउटसाइड फैक्टर होता है। एक्सटर्नल सेरेब्रल इज एन आउटसाइड फैक्टर, एक्सटर्नल सेरेब्रल इज एन आउटसाइड फैक्टर, एक्सटर्नल सेरेब्रल इज एन आउटसाइड फैक्टर, एक्सटर्नल सेरेब्रल is any outside factor, external variable is any outside factor, external is any outside factor, not IV, not IV, not IV, not IV, not IV, not IV, that influence the dependent variable.